यूनिट 5 अभी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे ना, फोरियर सीरीज के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो फोरियर सीरीज एक्चुअली होता है क्या है ना, एनी फंक्शन। तो पहले वी हैव टू डिस्कस द पीरियडिक फंक्शन। पीरियडिक फंक्शन हम डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली पीरियडिक फंक्शन क्या होता है, एनी फंक्शन एफ एक्स एक स्पेसिफिक इंटरवल में रोटेशन करेगा। दैट मीन्स एफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा, then p is called as the period function. This is called as the period of this function. So p is called as the period of the given function. So just similar procedure we have to adopt here. When fx is equal to sin x, जब यहाँ पे देखेंगे हम fx है and that is sin x है, तो just we can say that is fx plus पाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ sin x। fx plus 2 पाई करेंगे तो you can see here that is sin 2 pi plus x, that is of sin x. So which is same as this function fx. So x plus 2 pi plus x is equal to fx. So यहाँ पे क्या होता है ना, period 2 pi है, because the function is returned back to this function. So period of sin x is equal to 2 pi. Period of sin x is equal to 2 pi होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं sin x का पीरियड 2 पाई है। सिमिलरली cos x हम चेक करेंगे तो cos x का पीरियड ऑल्सो 2 पाई होगा। पीरियड ऑफ cos x, that is also 2x, and period of tan x, tan x का पीरियड पाई है। तो ये हम देखेंगे that is the periodic function whenever it is defined as fx plus p is equal to f of x, then that is called as the periodic function. Just example, sin x, cos x and tan x. sin x का पीरियड होगा 2 pi and cos x का पीरियड also 2 pi होगा। Suppose question is asking you what is the period of sin 3x, period of sin 3x, then we know the period of sin x is equal to 2 pi, then 3x करेंगे that is divide हो गया, 3 parts हो गया period, so that is we have to mention that is 2 pi by 3. Period of cos kx, period of cos kx, तो क्या होगा ना, cos x का पीरियड 2 pi है तो 2 pi पे क्या करेंगे यहाँ पे, so this is the period of this function. Tan x का similarly procedure have to adapt of period of sin x, period of cos x, period of tan x. Period of tan x तो x था, tan 5x करेंगे तो that is also pi by 5. That is the periodic function we have defined here. So just we can define the period of sin x, period of cos x, period of tan x, and this is specially considered the period of the secant function. Again, we define this Fourier series. Fourier series. What is Fourier series actually? Fourier series में any function हमको given होगा उसका हम series calculation करेंगे, and series generally consider for the sin x and cosine x का।
fx which is equal to a0 plus summation over n is equal to 1 to infinity n cos nx plus a bn sin nx. So this is the actually this Fourier series you have to define. Fourier series means that is sine cosine series ये function है. तो ये cosine function, sine functions जो यहाँ पे necessarily evaluate only for the a0 value evaluate करेंगे, an value evaluate करेंगे, and bn value evaluate करेंगे. This value we are evaluated and substitute in this equation. That is specially which called as the Fourier series. इसको हम Fourier series कहते हैं. तो फोरियर सीरीज का मीनिंग होता है जो एक सीरीज हमको प्रोड्यूस करना है, हमको fx गिवन होगा. whenever this is a given you, fx is given to you, fx गिवन होगा, उसको हम सीरीज का फॉर्मेट में प्रोड्यूस करना होगा हमको. तो a0 हाउ टू इवैल्यूएट a0, ये sin x का पीरियड 2 पाई था, cos x का पीरियड 2 पाई है. सो fx इज ओनली पीरियड ऑफ 2 पाई. दिस इज पीरियड ऑफ 2 पाई कहेंगे, पीरियड ऑफ 2 पाई. ये जो Fourier series whenever you have to create here, that is the function of period of 2 pi only we can define these functions. तो यहाँ पे a0 हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा ना 1 by 2 pi, 1 by 2 pi integration of minus pi to pi and fx dx. तो just we can here fx dx का इंटीग्रेशन करेंगे within the period of 2 pi. That means upper limit minus lower limit 2 pi होना चाहिए. तो that is we can say that this is a periodic function. So a0 we can define this process, just we have to evaluate the integration for a naught. Similar we can produce also. Similarly we produce an also. An that is 1 by pi, and that is integration minus pi to pi, and fx cos nx dx. So that is another function an you can evaluate it here by this condition. Fx cos nx we have to evaluate it here. And another is the an, and another function is bn you can evaluate, and that is 1 by pi integration minus pi to pi fx sin nx dx. We can just define 3 Fourier constants we have to evaluate here, and just evaluating this value and substituting the series, and that series is called as the Fourier series. Just an, bn, and n, these are called as the Fourier constants. These are called as the Fourier constants. Fourier constant, just we have to use the integration and nothing else. After evaluating this value, क्या करेंगे ना, you have to put in this function here, represented this function. इसी फंक्शन में a0, an and bn वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दैट सीरीज इज प्रोड्यूस्ड फॉर Fourier series. That series is produced for Fourier series. So that is for period of 2 pi we have to use here for the Fourier series. Suppose one question you have to consider here for the case of Fourier series. What is the Fourier series? One example. Example. So what is example? Now, fx is equal to x square by 2 and minus pi to pi, minus pi less than equal to x and less than 2 pi. So just you can see and find the Fourier series question. How do you find Fourier series? Find Fourier series and deduce that and deduce what you want to deduce here. And we want to deduce
अभी हम क्या डिड्यूस करना पड़ेगा इसे, सीरीज में कुछ डिडक्शन है तो हमको परियोजित करना है और कुछ भी निकालना है, तो we need to deduce for the question. So one is deduction 1 minus 1 by 3. 1 plus 1 by 4, 1 plus 1 by 4 plus 1 by 9 plus that which is equal to pi square by 60, pi square by 6. And another question is 1 minus 1 by 4 minus 1 by plus 1 by 9 minus 1 that is equal to pi square by 12. From this series, we reduce these conditions. That is our Fourier series, one example, and reduce this problem. So how to solve it, this solution? So a question, that is a question is can evaluate is here Fourier series. So first we recall what is Fourier series, what are our requirements actually. What is our requirements in Fourier series? In Fourier series, what we need to find actually, and that is fx, and that is equal to क्या होगा ना a0 plus summation over n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. Actually, our requirement is this. Each or for you need to evaluate this. What is the necessary calculation? A naught is necessary calculation, and an is necessary calculation, and bn is necessary calculation. After evaluating this value, we can substitute in this series, and that is produced the Fourier series. So first of all, we see here fx we can need to evaluate. fx तो क्या होगा, फर्स्ट वी कैन इंटीग्रेशन दिस लिमिटिंग वैल्यू, तो a naught value we have to evaluate here. A naught is equal to 1 by 2 pi integration minus pi to pi fx dx. So fx is already x square by 2 is here. So 1 by 2 pi integration minus pi to pi fx is x square by 2 dx. After integration of this function, that is 1 by 2 pi and 1 by 2 also outside, and x square into x cube by 3, and limiting value is minus pi to pi. So what is the value actually? That is x cube. Limiting value you can put here. So that is 1 by 4 pi, 1 by 12 pi. And this value is 5 to pi. So that is pi cube to 6, and 1 pi is cancelled, pi square by 6. That is pi square by 6. That is a naught you can evaluate here. Then we need to find out the an. What is an? An evaluate. An value that is 1 by pi integration minus pi to pi fx
cos nx dx. The x already given here, fx is x square by 2. Then you can substitute in place of fx, that is x square by 2, 1 by 2, 1 by pi, minus pi to pi. And x square is 2. Cos x square cos nx dx. Just how to simply integrate this function by using the islet, actually. You can check here. आइलेट के हिसाब से हम कैसे यूज करेंगे ये इंटीग्रेशन? तो आइलेट के हिसाब से जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इज द फर्स्ट फंक्शन होगा when you consider the islet here. The u is the first function and p is the second function. The first we can see in between them what is the function. This is a u, this is u, and this is v. Islet के हिसाब से the u function को just you can give here x square. After the continuous the derivative, that is 2x. Again you can derivative, that is 2. And v function को continuously integrate. Integration of v function just you write here. Sin nx by n. Again integrate this function. Minus cos nx by n square. Again integrate this value. Minus sin nx by n cube. So that is we have to first function first step में fix रहेगा, उसके बाद उसको separately integrate derivative करेंगे up to constant. Second function को starting से ही integration करना पड़ेगा continuously. So एक plus symbol, एक minus symbol, एक plus symbol just you can see. इसके बाद क्या करेंगे, इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1/2 पाई, तो इसका रिजल्ट हम डायरेक्टली अभी लिखते हैं. दिस प्लस इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स होल डिवाइडेड बाई एन. एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स होल डिवाइडेड बाई एन. जस्ट 3 मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली दिस वैल्यू माइनस इंटू 2x इंटू माइनस दिस, तो प्लस हो जाएगा प्लस 2x cos nx by n square and minus 2 sin nx by n square n cube. And just you can put the limiting value minus pi to pi. Just you remember when you substitute the limiting value pi, we know that the sin n pi equal to 0. When this value put करेंगे तो we consider, but we know sin n pi that is 0. So यहाँ पे जो पाई डालेंगे और माइनस पाई यहाँ पे डालेंगे एक्स के जगह में, लिमिटिंग वैल्यू के जगह में, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा एंड दिस वैल्यू आल्सो 0 हो जाएगा. When you substitute the value pi or minus pi in place of x, then this value becomes 0. ये वैल्यू तुम्हारा 0 हो जाएगा. So just you remember this value 0 हो गया. Again ये 0 नहीं होगा, this term is not 0. ये वैल्यू तुम्हारा 0 नहीं होगा. क्या होगा इसका वैल्यू? Now 1/2 pi, यहाँ पे पाई डालेंगे तो 2 pi cos n pi, 2 pi cos n pi होगा ये by n square. टू पाई cos n pi by n square. माइनस पाई डालेंगे, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 2 pi cos n pi.
एन स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 पाई, हम कॉमन ले जाएंगे तो 4 पाई हो जाएगा। दिस इज 4 पाई cos n पाई बाई 2 पाई n स्क्वायर। तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली 2, दैट इज 2 cos n पाई by n square, or you have also written 2 into -1 to the power n by n square, because cos n pi is equal to -1 to the power n. So we evaluated here n value. Sin n pi, this value, and cos n pi is equal to -1 to the power n. Now यहाँ पे देखेंगे जब फोरियर सीरीज का जो ए बी एन वैल्यू हो गया, अभी नेक्स्ट क्या आएगा ना, ए बी एन वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे। बी एन का जो फॉर्मूला था दैट इज ऑल्सो 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई to पाई। एफ एक्स जो था x² by 2 है, एंड साइन एन एक्स dx है। तो 2 इधर ले लिए हैं, x² by 2 का जो 2 वैल्यू पार में ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 1/2 पाई, एंड ये वैल्यू जो होता है जस्ट इंटीग्रेशन -पाई to पाई x² साइन एन एक्स। अभी सिमिलर प्रोसेस जो अडॉप्ट किए थे इंटीग्रेशन के लिए, वी यूज दिस फॉर्मूला u इंटू v फॉर्मूला। यहाँ पे u एक फंक्शन कंसिडर करेंगे, v एक फंक्शन, सेकंड फंक्शन। u फंक्शन तो x² है, सो x² फर्स्ट वी कीप हियर, उसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, उसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा। साइन एन एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, माइनस ऑफ कॉस एन एक्स होगा बाई एन हो जाएगा। सेकंड में क्या हो जाएगा ना, माइनस ऑफ साइन एन एक्स बाई ऑफ एन स्क्वायर होगा। नेक्स्ट में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एन एक्स बाई एन क्यू आ जाएगा। देन प्लस माइनस प्लस करेंगे, तो अभी क्या करेंगे ना, ये जो वैल्यू है वहां पे प्रोडक्ट कर देते हैं। तो अभी इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 पाई लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन, इसका जो इंटीग्रेशन हम लिखेंगे, दिस मीन्स माइनस ऑफ x² cos nx बाई एन आएगा। देन दिस द प्लस 2x साइन nx बाई एन स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पे दिस द प्लस 2 cos nx बाई एन क्यू आएगा। लिमिटिंग वैल्यू -पाई to पाई। देखो ये जब डालेंगे, दिस इज द कोसाइन फंक्शन, ये तो साइन एन पाई तो 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो कॉस एन पाई डालेंगे तो माइनस कॉस एन पाई माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 0 हो जाता है, एंड यहाँ पे डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा जब लिमिटिंग वैल्यू डाल देंगे। तो बी एन 0 हो गया, सो बी एन 0 हो गया। तो फोरियर सीरीज में क्या होगा, फोरियर सीरीज में अभी हमको पुट करना पड़ेगा ए जीरो एंड ए एन वैल्यू, ए जीरो एंड ए एन वैल्यू अभी हमको पुट करना पड़ेगा। देखते हैं ए जीरो एन वैल्यू पुट करने के बाद क्या वैल्यू आता है फोरियर सीरीज में, दैट वी कैन से दैट इज आवर फोरियर सीरीज।
तो ये फोरियर सीरीज हो जाएगा अभी एफ एक्स, हम ऑलरेडी डिफाइन किए हैं यहाँ पे फोरियर सीरीज, देख सकते हो। तो देखते हैं हाउ टू डिफाइन दिस फोरियर सीरीज एक्चुअली। तो our Fourier series fx, and that is a0 plus of summation over n is equal to 1 to infinity and an cos nx plus bn sin nx, ये हमारा फोरियर सीरीज है। तो तब क्या है ना, ए जीरो वैल्यू ऑलरेडी एवेल्युएटेड किए यहाँ पे, दैट इज पाई स्क्वायर बाई 6 एंड प्लस ए सीरीज है एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, एन का वैल्यू क्या है ना, 2 इंटू माइनस 1 टू द पावर एन बाई एन स्क्वायर था, एन कॉस एन एक्स है, बी एन तो जीरो हो गया, तो दिस इज आवर फोरियर सीरीज। क्वेश्चन इज दैट वी यू evaluated the Fourier series। क्वेश्चन था फोरियर सीरीज का एवल्यूएशन करने के लिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा, दिस इज योर क्वेश्चन, वी नीड टू एवल्यूएट दिस वन, जस्ट यू कैन सी वी नीड टू एवल्यूएट दिस फोरियर सीरीज। तो ये तो ऑलरेडी जीरो हो गया, सो फोरियर सीरीज कैलकुलेशन करेंगे एंड डिड्यूस करेंगे, क्या डिड्यूस करेंगे, एंड दिस इज द डिडक्शन पार्ट, दिस टू कंडीशन को निकालना पड़ेगा। द फर्स्ट वी पुट दिस वैल्यू इन दिस सीरीज, अभी एक सीरीज हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये जो सीरीज हमारा आ गया अभी देखो, अभी इसको एक्सपांड कर देते हैं, मतलब एफ एक्स अभी हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 6 प्लस 2 कॉमन ले जाते हैं, तो अभी क्या वैल्यू है ना, एन के जगह में 1 डालेंगे तो क्या जाएगा, माइनस 1 बाई 1 स्क्वायर कॉस एक्स, एन 2 डालेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 बाई 2 स्क्वायर कॉस 2x, एन 3 डालेंगे तो क्या होगा, माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर कॉस 3x, एन नेक्स्ट वन डालेंगे तो क्या होगा, 1 बाई 4 स्क्वायर कॉस 4x, माइनस से कंटिन्यू करेगा। अभी हम देखते हैं किसका वैल्यू डालने से प्लस माइनस आएगा, बिकॉज फर्स्ट डिडक्शन प्रोसेस इज प्लस माइनस में है, इसलिए एफ एक्स से जीरो डालेंगे एक्स के जगह में, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 6 प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जीरो तो 1 हो जाएगा, दिस इज वैल्यू कॉस जीरो हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो कॉस जीरो हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 1 हो जाएगा, ये भी कॉस जीरो हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 1 आएगा, कॉस जीरो होगा तो दैट इज ऑल्सो 1 आएगा, तो जितना भी कॉस वैल्यू है दैट इज कन्वर्टेड इनटू 1 का वैल्यू। तो व्हाट इज दिस वैल्यू एक्चुअली, माइनस 1 प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 16 माइनस दैट, ये सीरीज है। तो यहाँ पे एक माइनस का मान ले सकते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन के हिसाब से आ जाएगा। तो एफ जीरो कितना है ना, एफ एक्स था एक्स स्क्वायर बाई 2 है, एफ एक्स था एक्स स्क्वायर बाई 2, एफ जीरो दैट इज जीरो हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू कितना ना, पाई स्क्वायर बाई 6 प्लस माइनस 2 कॉमन लेते हैं एंड 1 माइनस कितना 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 9 माइनस डेट, ये जो सीरीज आ गया। तो अभी ये जीरो ये राइट साइड में ले जाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा, ये 1 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 9 माइनस डेट, तो क्या करेंगे ना, ये भी इधर नेगेटिव एक नेगेटिव कैंसिल, देन पाई स्क्वायर बाई 2 है। सो दिस इज वन क्वेश्चन, 1 माइनस 1 बाई 4
प्लस 1/9 प्लस माइनस जहां पे होगा तो दैट इज अ पाई स्क्वायर बाय 12. One deduction process you have to find out here. And another deduction क्या है ना, एक प्लस माइनस में खत्म हो गया. एक अनदर कंडीशन है प्लस में क्या होगा, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 में क्या आएगा. उसका जगह में क्या डालना पड़ेगा, जो सीरीज है उसी सीरीज में भी यहाँ पे डालना पड़ेगा. देखो ये भी cos 0 था, पाई डाल दीजिए. देखो cos पाई तो -1 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा. जब cos 2 पाई तो 1 है, तो ये पॉजिटिव ऑलरेडी 2 पाई मतलब पॉजिटिव है, अभी cos वैल्यू भी पॉजिटिव हो गया. cos 3 पाई नेगेटिव आएगा, बिकॉज cos n पाई का वैल्यू -1 है. cos n पाई का वैल्यू -1 है, -1 टू द पावर n. हम n का जब वैल्यू हम 0 डालते हैं तो cos 0 पाई डालते हैं. सपोज n की जगह में 1 डालेंगे तो cos पाई आएगा, n की जगह में 1 डालेंगे तो cos पाई, दैट इज -1. यहाँ पे -1 अगर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा. एंड जब n की जगह में 2 डालेंगे, व्हेन यू पुट 2 तो 2 1 आ जाएगा, दिस इज cos 2x, तो पॉजिटिव आ जाएगा. फिर सिमिलर दिस वैल्यू, तो ऑल आर पॉजिटिव हियर. सो f ऑफ पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, f ऑफ पाई इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा जो पाई स्क्वायर बाई 6 तो है, ये तो रहेगा पाई स्क्वायर बाई 6. दिस इज पाई स्क्वायर बाई 6 -2 इंटू, सॉरी +2 इंटू ये जो वैल्यू है माइनस -1 cos पाई है, -1/1² था, दिस इज cos पाई, प्लस 1/4 cos 2 पाई होगा, माइनस 1/9 cos 3 पाई होगा, प्लस ऐसे आएगा. तो 2 पाई तो ऑलरेडी 1 है इसका वैल्यू, 3 पाई -1 होगा, एंड पाई ऑल्सो -1 होगा. सो ये पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगा. एफ पाई कितना होगा ना, पाई स्क्वायर बाई 2 हो, पाई स्क्वायर बाई 4 होगा, बिकॉज एफ पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2 हो गया. तो ये इधर आ जाएगा, तो -पाई स्क्वायर बाई 6 इजिकल टू 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1/16 प्लस डेट. तो ये जो वैल्यू है पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 6, दैट वैल्यू बिकम्स कितना आएगा ना, एलसीएम तो 6 जाएगा. 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर तो 2 पाई स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1/16 प्लस डेट. तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. What is the deduction value? Now this value becomes 1 plus of 1/4 plus of 1/9 plus of 1/16 plus dot. This is equal to pi square by 6. So second condition also prove it. So that is a Fourier series we have to discuss. Another some condition also need to show for the next.